record this. Okay. Pause recording, stop recording. Anyway, so it's almost 9:10. So students, आपको याद होगा कि we were doing quadratic sequences and we started a past paper Yes, sir. question by November 2017. And you know why this year and this time is actually important in my life? पता होना चाहिए आपको. It's important for Quadratic the, circle. yes, the first trip at lumps. So ये हमारा सवाल था. It was really a long one, बहुत लंबी descriptions थी, and I told you not to write these descriptions because when you get a table in the exam, the table headings actually tell you what to look for. So I just played around with these numbers. I saw this first table, and my first question over here was not prediction, but the examiner skipped that and he moved on to description. Write down in words two patterns from table 2 for this column, which is this one. And you said that it's a quadratic sequence, you have a common second difference of 2, or you have an increasing first difference by 2 as well. So you just wrote that and moved on. You might have said that these all are even numbers, but it's better to say that apart from 0, uh, they are actually even numbers. Anyways, general rule for k in terms of f, I think this is where we ended. और आपको याद होना चाहिए कि जो इसका आपका आंसर था, that was k. The second common difference is 2 or something. Exactly, that is true. जो आपका फाइनल आंसर था, that was k equals to f square minus f. ये हमने क्लास में निकाल लिया था. The only मसला with this is the symbols. तो सिंबल्स के लिए हमेशा याद रखो, like always, it's not only for quadratic sequence, it's for all of the sequence. Find the general rule for the thing, okay, for k. जो भी चीज find the general rule for के बाद लिखी हो, it has to come here in place of un जहां आपका होता है. आप किस चीज के लिए रूल निकाल रहे हो, that is what comes on the left. एंड जनरली जो आपका राइट साइड पे सिंबल होता है, दैट इज एन. जो हमने आंसर भी निकाला था, दैट वाज समथिंग लाइक यू ऑफ एन इज इक्वल टू n square minus n. We generally 9 times out of 10 have been using the symbol n on the right side, but now it forced us to use f. तो जो भी सिंबल आपका इन टर्म्स ऑफ के वर्ड्स के बाद लिखा होता है, वो आपने राइट साइड पे लिखना होता है, which is usually n, but this time this was like the first time that this guy forced us to use f. So it's yet another learning curve for us कि हम symbols अपने ठीक यूज करें, because I can show you the marking key right here and right now. आपका इन दो नंबर्स में से जो पहले ही हमें बहुत मुश्किल से मिले हैं, by applying 3 formulas, एक नंबर वैसे ही कट जाएगा. So why should we just risk that? Okay, so find a general rule for this guy in terms of this guy, which is female colleagues, which is f. तो पहले अपना सारा सॉल्व कर लो, एंड पे याद से सवाल को दोबारा पढ़ लिया करो एंड मॉडिफाई योर सिंबल्स एज यूर वर्किंग. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. ऑलराइट, इसके बाद we move on to the next question, which was verify. You already know how to verify. आप लोग सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए इट्स अ बिट बेटर टू एक्चुअली फिल इन दिस टेबल, ताकि आपको प्रिडिक्टेड टर्म्स का पता हो. एंड आई नो दिस इज इंक्रीजिंग बाय 2, इंक्रीजिंग बाय 4, इंक्रीजिंग बाय 6, इंक्रीजिंग बाय 8, सो दिस इज गना इंक्रीज बाय 10, तो मैंने 30 लिख दिया. एंड दिस इज गना इंक्रीज बाय 12, मैंने 42 लिख दिया. एंड दिस इज गना इंक्रीज बाय 14, सो मैंने 56 लिख दिया. ओके, I'm pretty sure all of you, if not all of you, have this table drawn in your notebooks. तो आपको ये दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. I really doubt शायद आपने वेरीफाई किया हो. For verify, I might choose the seventh term. मैं sixth भी choose कर सकता हूँ. Let me just choose the seventh term. Okay. So n equals to 7. और मैंने यहाँ फिर लिखा k is equal to f square, यानी 7 square minus 7. K is equal to 49 minus a 7. K is equal to 42, which is exactly the same as the answer that I wrote over here. You can see that. Then you can write your sentence as verified successfully
as I got the same answer, the correct answer as the predicted terms. इस सेंटेंस का एक मार्क है, you need to write that, लेकिन नोट्स के लिए आप सिर्फ ये लाइंस ड्रॉ कर दो, just telling yourself कि मैंने एग्जाम में टाइप करना है, अभी टाइम जाया नहीं करना, because I know this. Okay. आगे हम चलते हैं अपने बड़े सवाल में. You can actually see it's 24 marks, which is a quarter of your exam cleanly. Okay. This is your question over here. पहले सवाल को जरा गौर से पढ़ो. And the way this is gonna go is I'll just write you to write down a bullet point, and we'll just answer every bullet point in its place separately. Okay. अगर मैं आप सबको ये दूं कि ये सारा कॉपी डाउन करो, आई थिंक टाइम बहुत जाया होगा. सो वी माइट जस्ट डू इट बुलेट बाय बुलेट. सो आपका पहला बुलेट पॉइंट है प्रिडिक्ट मोर वैल्यूज एंड रिकॉर्ड दीज इन द टेबल. राइट. लेकिन इसके लिए Sir, आपको is this just a repeat नो of नो नो, like the last question we did? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ रिपीट. हमने तो ये सवाल खत्म किया ही नहीं था. No, I'm saying like, is it not just like the same process of या as the या या last इट question? यस 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 इट विल बी द सेम प्रोसेस, क्योंकि जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, इस पूरे सवाल में क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के अलावा कुछ है ही नहीं, विच इज रेयर. आपको जनरली दो सीक्वेंसेस आती हैं विच आर जनरली डिफरेंट. पहले अरिथमेटिक फिर ज्योमेट्रिक, पहले अरिथमेटिक फिर क्वाड्रेटिक. दिस वाज रेयर Sir, दैट but इट इज ओनली क्वाड्रेटिक. it's the justify question that I get हाँ, stuck on. यहाँ यहाँ जो जस्टिफाई का तरीका है, इट्स गोना बी वेरी क्लोज टू पेरीमीटर, एंड यू विल सी व्हाई. इट विल बी कॉमन सेंस, लेकिन पहले हम एंड तक पहुंचे, देन विल सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. ओके. So one thing that I want from you guys is, if you're using your laptops and you're smart enough and you can see the whole screen, आप बेशक इसकी screenshot ले लो, या just take 2 minutes and draw this table on your notebooks, because when you draw it, you are gonna fill it in for, let's say, the sixth term, the seventh, and the eighth. Don't waste your time filling all of these rows, because that's humanly impossible to nahi मैं कहूँगा. It doesn't make sense to fill in all of these rows and waste a lot of good time just for 2 marks of prediction. That doesn't make sense. We all know that. So 3-4 rows बस आप fill कर दो, and that's it. इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं. I honestly don't know why the examiner gave this much space. Uh, शायद उसे खुद भी ना पता, वो नींद में होगा. Anyways, so you have number of males, you have number of females, which is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. This acts as your figure number या stage number या diagram number जो आपका वैसे ही n दिया होता है. But in this question, we don't really have anything known as n. We have either f या m, right? Then you have k, you have b, you have s, and then something known as total, right? अब आपने पहला बुलेट पॉइंट अपनी कॉपीज में लिख लिया होगा, विच इज प्रिडिक्शन. आई नीड अ हेड्स अप फ्रॉम एवरीवन कि क्या उन्होंने टेबल की लेट्स से स्क्रीनशॉट ले ली है, एंड दे आर गोना वर्क ऑन दैट स्क्रीनशॉट समहाउ, मे बी इफ दे हैव अ टच लैपटॉप और समथिंग, or have they written this table down in their notebooks and they're ready to fill it out by predicting more values. Sir, we already wrote this in class. अच्छा, You आपने लिख already लिया. had us write it. ऑलराइट. तो आपने ये लिख लिया, नहीं दैट्स class चलो. लाइक अच्छी बात है. इफ यू रिटन दैट डाउन, आई वाज रियली स्केप्टिकल कि शायद आपने ना लिखा. ओके. सो आई थिंक वी आर एक्चुअली रेडी टू प्रिडिक्ट. लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉलम, व्हिच इज मेल्स. 1 2 3 4 5. 5 के बाद क्या आता है? आई थिंक वी ऑल नो बेसिक काउंटिंग थ्रू आवर एलिमेंट्री लेवल. 6 7 8. मैं सिर्फ 3 फिल कर देता हूँ. ओके. एनीवेज, यहाँ भी 6 7 8 होगा. sir आपने scroll down किया है अभी because मुझे अभी तक सिर्फ वो पहले females और general verify वाला नजर आ रहा है question. आई एम एक्चुअली नॉट एट दैट स्क्रीन. मैं तो यहाँ हूँ, जो एंड पे टेबल है आपका, एंड आई एम स्क्रॉलिंग माय स्क्रीन Oh राइट sir, नाउ. शायद आपको नजर नहीं आ. नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा sir. लेट मी No. स्टॉप शेयर एंड शेयर अगेन. ओके, मैं स्टॉप करता हूँ, एंड आई शेयर माय स्क्रीन अगेन. अच्छा, सो आई शेयर्ड माय स्क्रीन अगेन. क्या आपको अब नजर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? No sir, I just see a black screen. यू जस्ट सी ब्लैक स्क्रीन्स. किसी और को Yeah. कोई मसला है अबाउट नॉट बीइंग एबल टू शेयर टू सी माय स्क्रीन?
Anyone else? So among the participants, which are really few, क्या आप में से किसी को कोई मसला है about not being able Oh, to see sure, I my can see it. share I screen? can see it now. All right, chalo. I think this is Okay. the perfect time to start. Right. Chalo, shukran. This guy needs to just stay out of my way. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, that's 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, that's 6, 7, 8. I really hope किसी को इसमें मसला नहीं है, right? +2, +4, +8, sorry, +6, +8. इसके बाद क्या आएगा? +10, right? +12, +14. So none of you should have any confusion. Okay, why is this 30? Why is this 42? Why is this 56? All right. Can any one of you tell me about what's gonna come next? Like there is a desi way of doing it and there is a smart way of doing it. I can choose the desi way. You know this is a +3. You know this is a +5. You know this is a +3, +5, +7. You know this is a +9. So obviously the next thing is gonna be +11, right? But is there another sneaky way of getting the next value? I know it's a 36. Can anyone identify कि ये values हैं क्या? What is 1, 4, 9, 16, 25? Have you seen these numbers पहले कभी? Come on, people. Anyone? Have you seen these numbers पहले कभी? It's just the 4 times table plus 1. No, 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 never mind. not really. It's a +3, +5, +7, +9. Obviously, it's going to be +11, which is 36. But that is also a right way of guessing what comes next. Can you think of another way to guess what comes next? It's actually really sneaky yet really effective. It can save a lot of time, especially जब आप general rules निकालोगे. Literally बहुत ज़्यादा time save हो जाएगा. Okay, so even without No. doing any calculation, I know that my next answer is going to be a 49. And I know that my next answer is going to be a 64. हालांकि मैं +13, +15 करके वैसे ही पहुंच सकता हूं, but here is the real deal. Okay. In this question, your stage number, या figure number, या term number is these two columns. Okay. In the first term, which is number 1 का square क्या होता है? That is 1. 2 का square क्या होता है? That is 4. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64. सो आई हैव इट इन माई माइंड दैट यार ये तो स्क्वायर नंबर्स हैं. ये तो वो नंबर्स हैं जब मैं 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये आंसर आता है. सो आई डोंट रियली गो इनटू दैट +5 +7 +9 थिंगी. मैं तो वैसे ही ये आंसर लिख सकता हूँ. And this idea can actually help me get to my general rule 10 times more quicker. And honestly मुझे अपनी वर्किंग में वो 3 फॉर्मूला भी नहीं यूज करने पड़ेंगे. The answer is right there in front of me. It's just इसका जनरल रूल क्या होगा? n स्क्वायर या सॉरी m स्क्वायर या f स्क्वायर. इसका भी जनरल रूल क्या होगा? m स्क्वायर या f स्क्वायर. You are just squaring the number of males or the number of females, whichever symbol you want to use. वो तो सवाल आपको बताएगा कि write down the general rule of let's say s in terms of m या in terms of f, right? So symbol की खैर है, but concept पे जाओ. They are just square numbers. You are just squaring any of these columns, male or female, to get the column of b or s. Anyways, let's not use this method over here for this greetings column. All right, greetings column में कोई मुझे predict करना सिखा दे. This is a +8. Okay, +8. This is a +14, right? सो यानी मेरा जो प्लस वाला नंबर है उसमें +6 का एडिशन हो रही है. +14 में अगर मैं +6 ऐड करूं इट्स गोना बी +20, राइट? सो द नेक्स्ट इज गोना बी +26 व्हिच यू कैन क्लियरली सी. इसके बाद मैं क्या ऐड करूंगा? इट्स गोना बी +32. नाइस. सो 70 +32 is gonna be 102. And after this, I need to add a +38.
So can anyone tell me ये 102 plus 38 क्या होता है? I think it's gonna be something like a 140 maybe. And इसके बाद मुझे 44 ऐड करना पड़ेगा. I think that's gonna be 184. But is there Sir, I another? can't see or hear anything. You can't see or hear anything. Is that only a masla with Soha या किसी और को भी मसला आ रहा है? Anyone else facing this masla? Like No, all sir. of. Okay, किसी और को मसला नहीं है, but how did? अच्छा चलो वो तो she left. Anyways, when she joins, I'll actually tell her this. Now, people, this is where the fun starts. आप मुझे बताओ, is there another way of getting this column of total number of greetings? The word total should ring a bell in your heads. Total का क्या मतलब है? You're adding something to get the numbers in this column. आप किन चीजों Yeah, को so add? you're adding number of kisses, bows, and smiles. Exactly. You're adding these three columns to get the total column. 0 plus 1 क्या होता है? 2 होता है. 2 plus 4 क्या होता है? 10 होता है. 6 plus 9 क्या होता है? 24 होता है. So 30 plus 36 plus 36 102 बनते हैं. So do you see another method of prediction? 42 plus 49 plus 49 140 होता है. So, with all this said, अगर किसी बंदे ने इस सवाल में प्रिडिक्शन ना की या गलत की, he should be penalized with negative marking because every column has actually multiple ways of solving it, meaning predicting it. और जो आप कह रहे थे ना कि सर मैं justify कैसे करूं? If your question, like when I scroll up to the question, if it tells you to justify G just made up of K plus B plus S, right? So the general rule of G should also be made up of the general rule of K plus the general rule of B plus the general rule of S, treated as perimeter. This is some sort of a shape which has three sides. Okay, पहली side ये है, दूसरी side ये है, तीसरी side ये है. Perimeter means sum of all sides, which is sum of K and B and S. So the general rule of G should also be made up of the general rule of K plus the general rule of B plus the general rule of S. So it's the same concept as perimeter to justify the general rule of G. Let's hope he asks us this. And that's it. क्योंकि justify के अंदर you use the concept that is being used for the general rule. यहाँ the concept is really similar to perimeter, which is simply telling us to add total. How the hell do you get a total column? You add some other columns to get this total column. So use the same concept to justify. अगर यहाँ area होता, I would have used the formula for area, plugged in all the general rules in place of all symbols and get my answer and justify. अगर perimeter हो, perimeter means sum of all sides. Or सारी can we see sides. the justify question? हाँ हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ. So हमने पहला bullet point कर लिया which is predict. आगे चलते हैं. Our next bullet point is, आप भी heading उसकी दे दो. Write down in words a pattern for column S. Column S का pattern क्या होगा? Can any one of you tell me? It's really evident. Pattern what? S? Exactly, for S. S में क्या pattern है? It's, it's the square of the number of Good. males So and आप लोग ये भी कह सकते हो yeah. it's a quadratic sequence. आप ये भी कह सकते हो it has an increasing first difference by uh, uh, 2 and it has a common second difference of 2 as well. बट ये जो स्क्वायर नंबर्स वाली बात है ना ये बहुत कम लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे एंड द एग्जामिनर एक्चुअली रोट दिस एज अ पैटर्न कि ऑल आई सी आर स्क्वायर नंबर्स एंड दैट्स इट. So you just square the m column or the f column to get this. लेकिन that does not mean कि all of the other descriptions are wrong. वो जो हम पहले कहते थे ये quadratic sequence है, it has a common second difference of 2, it has an increasing first difference, वो सब गलत नहीं है. That's also right. Okay, so stick to your basics. लेकिन अगर आपको कोई अच्छा description अपने numbers की मिल जाए, do not hesitate to write it. Right? So I hope आप सबने ये लिख लिया होगा and I can move forward. Next up.
Find find the general rule for S in terms of M. You know your symbols now. Find the general rule for S in terms of M. Okay. I honestly don't want to use the three formula method for this. Find the general rule for S in terms of M. So you know your symbols. कोई मुझे इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं? The general rule for M this guy. square. Right. So I can only write S equals to M square. और अगर आपको फील हो कि यार कहीं नंबर ना कट जाए, वर्किंग नहीं की हुई, आप सिर्फ इंग्लिश में एग्जामिनर को जरा ताना मार के दे, लाइक कह दो कि प्लीज ओपन योर आईज. You can clearly see that the S column is actually formed by squaring the numbers in the M column. So the rule of No, S is but simply M square, right? sir, even if you use the three formula You will method, get the you're same still gonna answer. get the same answer, You have right? to get the same answer. आज तक जिंदगी में from the 2 years that I'm teaching you कभी मैथ में कोई contradiction हुई है? That you use one method, you get a different answer. You use some other method, you get a different answer. ये possible ही नहीं है, right? Especially when I'm teaching you guys, it's not possible. There is no contradiction in math if the methods are actually correct. Anyways, आगे चलते हैं. We've solved our third bullet just by looking. Because we are smart. Find the general rule for G in terms of M. अब यहाँ ना आपको जरा काम करना पड़ेगा. So let's apply the three formula method for this guy and get our answer. Okay. So आप लोग भी अपनी copies में कर लो, मैं भी कर लेता हूँ. The first formula is actually gonna be second difference divided by 2. And I know that the second difference is a plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. So I know the formula one is second difference divided by 2. Sorry, मुझे a equals to लिखना चाहिए था. Yeah. The first formula is a equals to second difference, which is 6 divided by 2. So a is gonna be 3. Okay. पहली चीज मैंने निकाल ली. I'm not gonna write the formula. I'm just gonna directly plug in the values. मेरे पास यहाँ जगह कम है. Okay. The second formula is 3a, 3 multiplied by 3, plus b equals second term, which is 10, minus first term, which is 2. Your meeting will end in 10 minutes. Whoa. Okay. So 9 plus b equals 8. b is equal to minus 1. जल्दी अब बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है. I hope you can see this small handwriting. I really don't want to bug you guys with this. मैं थोड़ा zoom in कर देता हूँ. Okay. I hope it's fine now. आगे चलते हैं. The third formula is something like this. A, which is 3, plus B, which is minus 1, plus C equals the first term, which is 2. 2 plus C equals 2. C is equal to 0. So आपका final answer जो बनता है, it's gonna be something like the final answer needs to be something like u of n is equal to n square, sorry, 3n square minus n. But these are not the symbols that I need to use. G is equal to, this is the column of G, is equal to 3m square. Okay, write down the general rule for G in terms of m, 3m square minus m. Please सारे ये आंसर देख लो और इसे नोट डाउन कर लो, because this is the way that you're actually gonna write it. Done. So just give me a heads up that I can move forward, so I can move forward. You can see all of the working over here. आप screenshot कर सकते हो. It's preferable कि आप लिख लो so that you can know what it is. Can I move forward? Yes, sir. Okay. शुक्र है किसी ने yes कह दिया. Now we go to the next bullet point. I'm pretty sure it's gonna be test. So हम यहाँ पहुंच गए test पे, right? Testing हम कैसे करते हैं? By applying any value which is already given. आप बता दो कौन सी value test करना चाहते हो? First, second, third, fourth, fifth. It's your call. Anyone? Anyone has any Yes, preference? sir. कौन सी वाली? Number five. No. Yeah.
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डिड यू से 5 और डिड यू से Which one फ्लैप? do we have to which one do we have to test? We can test either one of the greetings. हाँ, आप ऑल ऑफ द ग्रीटिंग्स व्हिच आर गिवन, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, द सेकंड, द थर्ड, द So फोर्थ, द obviously do फिफ्थ। the one that we found the formula for, sir. मीनिंग? मीनिंग? Number of small. ओहो, आपने टेस्ट करना है। डू यू वांट टू टेस्ट द सेकंड टर्म, द थर्ड टर्म, द फोर्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म? मैं ये पूछ रहा हूँ। Fifth. ओके, Fifth. फिफ्थ। सो समबडी सेड फिफ्थ, मैंने फिफ्थ कर दिया। राइट। G is equal to 3 multiplied by 5 square minus 5 because it was 3m square minus m. Okay, मुझे ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. So G is equal to 3 multiplied by 25, which is 5 square minus 5. And that is gonna be 75 minus 5. And that is gonna be 70. Is your fifth term a 70? Let's check because I have trust issues. मैं check करूंगा. Yes, it is a 70. So आगे मैंने पूरा sentence लिखना है. Tested successfully as I've done blah 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 blah. Okay. इसके नीचे एक और भी मेरे पास वैसे पेज है. Alright. अब आप मुझे बता दो वेरीफाई कैसे करना है. कौन सी टर्म्स में मैं वेरीफाई करूंगा, बिकॉज दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Sixth term, seventh term, eighth term. Choose any that you like. Please जल्दी से बता दो. Any preference for verify? Anyone? Sir, do the seventh term. Okay, seventh. We all know seven is a good number. At least I like 7 a lot. So verify n equals to 7, right? और इसके लिए let's use the formula again. That is going to be 3m square minus m. इसके अंदर हम 37 square minus 7 करेंगे, which is going to be 3 multiplied by 49 minus 7, which should be 147 minus 7, which should be 140. Is my seventh term a 140? I hope it is because math में contradiction नहीं होती. It is. आगे मैंने अपना पूरा sentence लिखना है, which is verified successfully, and just draw lines telling me in my notes कि मैंने ये पूरा लिखना है, वरना गुना मिलेगा मुझे. Now we come to the justify part. और उसके लिए मैं नीचे इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ. Right? Please ask yourself कि द टोटल ग्रीटिंग्स कॉलम ये कौन से कॉलम्स को ऐड करके बना हुआ है? आई थिंक यू गाइज आंसर दैट थोड़ी देर पहले. कैन यू टेल दैट अगेन? स्टूडेंट्स, हमारा थोड़ा सा टाइम रहेगा. द मीटिंग इज गोना बी ऑफ इन 3 minutes. जल्दी से बता दो. ग्रीटिंग्स वाला कॉलम, टोटल ग्रीटिंग्स वाला कॉलम किन कॉलम्स को ऐड करके बना हुआ है? A, B, and S. Good. So can I write all the general rules of all of these columns? Like if every value in the total column is made by adding these three columns, the general rule of the greetings column, the total greetings column, should also be The made by total of adding all the the general rules of all these columns. So इसका सबसे पहले हम S का रूल निकालते हैं. S is equal to M square. Done. B का भी same है. B is equal to M square because it's practically the same values, right? और इसका जनरल रूल तो मैं पार्ट नंबर बी में वैसे ही निकाल चुका हूं. याद है आपको? k is equal to f square minus f. Now I'm not going to use the symbols f anymore because all of these other symbols are m. अगर मैंने यहाँ f लिख दिया, so I can't really add or subtract them. वो तो मुझे फायदा ही नहीं होगा. So I think it's better that I write this as k equals to m square minus m. और लिटरली आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं. आप एग्जामिनर से कह दो, भाई आंखें खोलो, मैंने ये पार्ट बी में निकाल लिया है. So don't force me to copy paste my working again. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. Just buzz off, right? So why don't you add all of these numbers? इन सबको add करो, and that's basic algebra. So I just want to do m square minus m plus m square plus m square. How many m squares do you see? Three of them, right? So you just go down and write down something like 3m square minus m. There is only one minus m over here, and that's it. Have you achieved the same general rule जो आपने वो 3 फॉर्मूला से अचीव किया था
just by adding the general rules of the column that made up the total column in the first place. Are these the same? Yes, they are. So that's it. The end. You've basically mastered justification. सो जस्टिफाई में प्लीज डरना नहीं है। सबसे पहले अपने आप से पूछा करो, जिस रूल को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, यानी जिस कॉलम को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, व्हाट इज दैट कॉलम अबाउट? इज इट पेरीमीटर? इज इट एरिया? वो है क्या? राइट? इफ इट्स एरिया, जिस शेप का एरिया है उसका फॉर्मूला यूज कर लो। एंड इफ इट हैज लेट्स से लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ का जनरल रूल निकालो, विड्थ का जनरल रूल निकालो, प्लग इट इन द फॉर्मूला। if let's say it has a trapezium, आपको पता है trapezium is sum of parallel lines divided by 2 multiplied by height। तो parallel lines का जनरल रूल निकालो अलग अलग, उन्हें उनकी जगह पे प्लेस करो इन द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को भी देखो वो कैसे बदल रही है अलोंग द स्टेजेस, उन वैल्यूज का भी जनरल रूल निकाल लो एंड प्लग इट इन द फॉर्मूला। यू विल गेट द सेम जनरल रूल जो आप वैसे निकालोगे थ्रू एरिथमेटिक और क्वाड्रेटिक और ज्योमेट्रिक। तो जस्टिफाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऑनेस्टली। सिंपली देखो व्हाट इज योर कॉलम अबाउट, और वो जिस चीज के बारे में है, just ask yourself what formula is actually used to get this thing. If it's perimeter, add all the sides. If it's area, use the formula for that shape. If it's just this common sense thingy which is just totaling, आप सिर्फ ये चेक कर लो कौन से कॉलम्स ऐड हो रहे हैं to get this total column and find their general rules and add them. That's it. So I hope you all would be ready for your summative. आपके लिए तो मंडे को होगा. That's your first lesson of the week. You only have 3 sequences: arithmetic, geometric, quadratic. सारा काम LMS पे डल चुका है. I know the meeting is gonna end even before LMS opens. कल रात को आपको पता होगा मैंने जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वो जो हमने फ्रैक्शंस वाला सवाल किया था जिसमें इंडेक्स लॉस की पूरी रिवीजन थी, आई मेड अ पीडीएफ फाइल ऑफ दैट एज नोट्स, और वो भी मैंने कल अपलोड कर दिया है इन एलएमएस अनाउंसमेंट्स एंड ऑन एलएमएस जहां ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं। सो प्लीज हैव अ लुक एट देम, स्पेशली दोस्त जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए या मिस कर दिया या जैसे आज नहीं आए। द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेसन विल बी शेयर्ड, तो अपने दोस्तों को बता देना कि टेंशन ना लें। I'll upload it on LMS. I won't announce it like on WhatsApp. मैं LMS पे डाल दूंगा because WhatsApp पे और भी बहुत लोग हैं, वो एक स्पैम ही होता है एक किस्म का, right? So LMS announcements में सब डाल जाएगा। Alright, so all the best. The lesson is over.